I take this up to welcome Professor S.M. Khan to the national level FTP organized by the Department of Commerce UG. I also welcome all the participants and faculty members to the session. Today's session is related to data management and cleaning in Jamovi. It's my pleasure to introduce the resource person of the day, Professor S.M. Khan. Sir has completed his master's in statistics and PhD in psychology. Currently, Sir is working as a professor in Aligarh Muslim University, Lucknow. Sir also worked with Research Design Standards Organization and Indian Railway. Sir also expertise in aptitude assessment and human error research. He has 19 years of teaching experience and published various research articles in national and international journals. So I would like to request sir to continue with the session. Welcome, sir. Thank you so much, my dear participants. Again, we are staying almost a session. It's second day. I hope I am audible. Yes, sir. Thank You're you so audible. much. Thank you. Let me share my talk. Fine. So the second day, data management and cleaning in Jamovi. And if you think about the day that we discussed about Jamovi, comparison, installation, interface, importing, exporting, and output management. Especially point number 5 and 6, we will continue time and again how to import the file, how to manage the output as well. So in this session, friends, you are going to enter the data directly into the Jamovi and how to edit it. Yesterday, we learned if the data is in different formats, how you can import it into the Jamovi. Entering and editing the data, variables type we need to define. As you know, the type of statistics can only be chosen on the basis of type of the variable. Various transformations, how to handle the missing data. Number of times we are having missing data in our data set, how to handle it. Creating new variables on the basis of computation or recording. Descriptive statistics, data summarization, and going with the conditional analysis using the selective, or you can say the filters. One of the participants yesterday asked me, sir, if it is possible to move slow. I will try my best. But you know, so many things are to be covered. I'm not trying to run in such a fashion just to pass on the slides. I'm here to transfer the knowledge. Fine, friends. How to enter the data? When you run the Jamovi, you will have the data view. Looks like a spreadsheet we have seen yesterday. And rows of the spreadsheet are the cases, or you can say the participants in your data set. And columns are the variables, number of variables in your data set. Okay. Directly click the cell and you can enter the value, press enter, or use the tab. So there are two methods. When you are entering the data, move to the next row by pressing the enter key. But when you are interested to enter the data column wise, then you will go to the tab. If you are willing to change the variable name or rename it, simply double click it, the column header, and you can change the variables.
Fine. Okay. Now move on to the hands-on practice. I will move very slow. जहां आपको लगता है थोड़ा फास्ट हूं तो प्लीज आस्क मी टू मूव स्लो. So friends, this is the first screen, or you can say the interface. Directly you are having, as I said, row wise, these are the number of cases as you have seen in other spreadsheets also, Excels, spaces, and so on. And column headers are known as the variable name. By default, 3 names are given to you. Okay. So there are 2 ways. Directly you can enter the data like this, enter the data and move to the tab and move to the like in such a fashion, or enter it like this. You can move in such a fashion. Fine. So there are 2 ways. You can directly enter the data. For example, let me type the data. 5 data set. Second variable, just click it. 1, 2, 1, 2. And third, please practice with me. 125, 132, 139. Any dummy data you can type in 3 digits. 150. So by default, you are going to have 3 variables only. How to change them? Directly, you can double click the column header here, here, or you can go to the variables. Now see, main variables. Right now, we are in the analysis mode. If I'm interested to change the name of the variables, of course, I am interested. Reason being that A, B, C are not the right label for the variable. How I will be knowing it, or a layman will be knowing it about the name of the variable. Okay. So there are 2 ways. Just double click this. When you double click this, then you will have this window. Double click it. Fine. So the cursor is here. Simply type the age. This is the age of the participants. Now, measure type. What type of data it is? This is not nominal. कॉलम का जो हेडर है सर, उसको डबल क्लिक करेंगे. जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे इसको डबल क्लिक आप जैसे यहाँ डबल क्लिक करेंगे. फाइन. एज measure type, it is not nominal. It is a continuous variable. I need to click it continuous. Rest is okay. Fine. Now I wish to change the second variable name. Again, double click it. Now click will help you. Click. This is gender. And now gender will work as a nominal. Fine. There are 2 ways. You can enter it. The variable name will be changed. Or anywhere you can enter like this. Now see, कहीं पे आप क्लिक करेंगे तो वेरिएबल का नाम चेंज हो जाएगा, और एंटर करें. फाइन. नाउ मूव टू द थर्ड वेरिएबल. क्लिक इट, and this is height. Again, measure type is continuous. Fine. And किसी भी साइड में आप एंटर करें, क्लिक करें या एंटर करें. ये देखिए मैंने क्लिक. Fine. Now the direction is given to you.
If you are interested to hide this, click it. Now see, we are in the data editor mode. Now the all that data has been entered. Fine. Sir, I have a doubt. Yes, ma'am. For gender, do we have to give the values, sir? Yes. I will discuss this point with you. Fine. Okay, sir. It's a good question. Fine. So this is the first data set. Fine. Now go to the variables. Now see, these are listed over here. If I am interested to add one more variable, the plus is there, right bottom corner, plus. When you click the plus sign, when you click the plus sign, you will have three options. What you are interested to add on: transformed variable, computed variable, or data variable. And every this domain has three more sub options. Insert mean when the cursor is there, a new variable will be inserted over there, not replacing the existing variable. Insert in between above this. If I click this insert, now see height के just ऊपर एक variable insert हो गया. Fine. Again, if I say plus, now accordingly we can define. We can give the variable name. We can give sub computation as well. Source क्या है? Okay. And so on. We can change the name. If again I back to the insert, append. Now you see append is in every domain. Append means the new variable name will be appended at the end of the all variables name. Now see, cursor मेरा यहाँ पे है. If I say append, now देखिए ये T2 height के बाद में append हो गया. So this is the difference between the two. You can use the insert in between. किसी एक वेरिएबल को आपको इंसर्ट करना है. अगर एंड में करना है तो यू कैन गो फॉर द अपेंड. इसी तरह से यू कैन ऐड n number of variables. If see this, when I click this, I'm not interested to change right now. So delete is there. Now I am in variable mode. Click delete. Okay, this has been deleted, whatever I did. Fine. Now you know how to add the new variable. Let me add the one more variable. Add data variable मुझे insert करना है. ये हम डिस्कस बाद में करेंगे. कंप्यूटेड एंड डेटा वेरिएबल. तो डेटा वेरिएबल में आई नीड टू इंसर्ट और अपेंड करना है वन मोर वेरिएबल अपेंड. नाउ देखिए डी थर्ड वेरिएबल मेरा अपेंड हो गया. अब नाउ वी कैन गो फॉर दिस. गो टू द दिस. मैंने डबल क्लिक किया यहाँ पर डी को और नाउ वी कैन चेंज इट. your you can say the hair color. You can say the hair color. This will be again nominal, just a label. Fine. Now see, now I need to give the labels to it. Labels. So there is a plus sign. Fine. I will give one. Fine. One more, two. Why I am trying to give the numbers? अभी जो एक पार्टिसिपेंट्स ने सवाल पूछा था, actually dealing with the numbers is very easy. Typing the data and coding. This is the coding of the variable. Fine. How to make it readable in such a fashion that layman must be knowing that
what is meant by 1 and what is meant by 2. Okay, now you go back to the this data editor, data view. देखिए यहाँ पर जाएंगे, एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है. इट इज सो फ्रेंडली, आप कहीं भी आप यूज करेंगे आपको परेशानी नहीं होगी. नाउ आई विश टू, देखिए ये सिर्फ 4 ऑप्शंस हैं आपके पास. When you are interested to go to the variable view, आप क्लिक वेरिएबल कर दें. जब डेटा में जाना चाहते हैं तो you just click the data, and when you are interested to analyze, then you click over here, and when you are interested to edit the output, you will go here. इससे आसान नहीं हो सकता एप्लीकेशन. Now I wish to go to the data. Simply click data. Now see, I have 4 variables, but the data for 3 variables only. What about the 4th one? Now enter it. 1, 1, 2, 2, or 1. Fine. So this is the first approach. Now we are able to analyze the data. अब देखिए, the first analysis, I wish to examine the frequency of the gender. Frequency of the gender. Go to the analysis. Okay. And now see, frequencies are here. Frequencies. In your case, you may not be having power, mediation and moderation and SAM. How to include it, I will demonstrate in coming sessions. You will be getting up to this up to factor only. So now I am interested to compute the frequency. Now see, click the frequency, and different type of frequencies are over here. So we will go for the first one, outcome. Okay, click this. Now you have this window, as you have seen in case of SPSS also. Those are familiar with the SPSS, they will be very surprising how commonality it has with the SPSS. Now see, I am interested to compute the frequency of the gender. You can drag it or drop it, or simply click it. जिस तरह से आपने देखा है कि कर्सर भी चेंज हो जाता है, आप इसको क्लिक करिए, देखिए कर्सर चेंज हुआ, आप ऐसे भी ले आइए. देयर आर मैनी वेज. अनदर, इसी को डबल क्लिक करिए, then you will have this. So 3 ways to select the variable into the target window. Now see, this is the output. Labels 1, we are having 4 cases. Now see, 1, 2, 3, 4, and label 2 is 1. And total cases are 5. 80% or 0.80, it is in proportion. You can compute into the proportion. 4 out of 5, 80% and 20%. Now question comes to you. Is it the right approach for analyzing the data when this table I am going to share with one of the examiner or evaluator? How he will be knowing that what is meant by 1, what is meant by 2 in case of gender? So this is not a complete table. This is not the complete analysis. Fine. So I will again go back to the data editor. मैं दोबारा यहाँ पर आया. Then go to the variable view. You click the variable view. Now I'm interested to go to the gender. See this is the gender. Fine. डबल क्लिक किया जेंडर. नाउ देखिए वो वाला विंडो खुल गया. डबल क्लिक कर, आप डेटा व्यू में भी डबल क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर भी डबल क्लिक कर सकते हैं. और नाउ क्लिक द दिस. व्हेन द वैल्यू इज 1, द जेंडर इज फीमेल. एंटर कर दीजिए. नाउ सी, दिस इज द सिनेरियो. Earlier the value 1 was given to the female, so both are going with you. If somebody is typing 1, it is meant by female. If somebody is typing female, it pertains to the 1. Second,
देखिए ये रिमूव नहीं होगा, जैसे आप महसूस कर रहे होंगे कि आई एम ट्राइंग टू रिप्लेस द टू। नो, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द जैमोवी। एसपीएसएस में ये नहीं होता है, किसी भी एप्लीकेशन में नहीं होता है। देयर आर डिफरेंट मेथड्स गिविंग टू द labels to the level. This is mail. Just enter. Now see, this is the scenario. Once I this make the correction, now you see that within a fraction of second, the output table is updated to you. This is the beauty of Jamovi. Many times smarter than existing applications. Okay, now again back to the Jamovi or data view. Now see, this is the data. If I enter more data, once I type the 1, now see the beauty. 2, 1, 2. आप जो भी डेटा एंटर करते चले बाय डिफॉल्ट ये लेता चला जाएगा। इसकी ब्यूटी देखिए, वंडरफुल एप्लीकेशन। Similarly, if you are not interested to type only, then we can also paste over here the same value. Like this, you can paste. कट एंड पेस्ट जिस तरह से दूसरे एप्लीकेशन में चलता है, इसी तरह से देखिए आप यहाँ भी आप कर सकते हैं। फाइन। सिमिलरली यू कैन गो फॉर द हेयर कलर। नाउ अब देखिए, अब मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा। मैंने जैसे ही डबल क्लिक किया, आई विल गो टू द वेरिएबल व्यू। वेरिएबल को डिफाइन करना है। ऑलरेडी हमारा 1 था लेवल। अब देखिए मैं इसको करता हूं, इसको ब्लैक। इफ somebody is typing 1 means black hair color, 2 brown। एंटर किया और डेटा देखिए मेरा यहाँ पे अपडेट हो गया। अगेन इफ यू गो बैक टू दिस, डेटा हैज बीन अपडेटेड टू यू। So now you know how to create the new data file, how to create the data in Jamovi। अभी यहाँ तक बताइए, अगर कोई डाउट हो तो मैं रिपीट करूँ, फर्दर चीजें आगे बढ़ाते हैं। I hope you are digesting this knowledge. Okay, now move ahead. There, do double click, sir. Can you please repeat? Dr. Shastri ma'am, Payal ma'am, I hope I did it. Confirm करें please. Thank you so much. Moving ahead, creating a new variables. Fine. One more thing now. Again, you go to this variable view. Variable view. अब देखिए हाइट है, हाइट मैंने क्लिक किया और यू आर हैविंग दिस प्लस साइन। अब मैं कंप्यूट करना चाहता हूं, कंप्यूट समथिंग, सो आई विल गो टू द इंसर्ट। अब देखिए हाइट से पहले हाइट से पहले सी आ गया, इंसर्ट हो गया। और इंफॉर्मेशन देखिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक सेम है, इट इज कंटिन्यूअस इन नेचर, बट यू हैव ए स्मॉल सर्किल। Superscript means it is a computed variable. It will guide you all together. ये ओरिजिनल वेरिएबल नहीं था, ये कंप्यूटेड वेरिएबल है। इसको देखिए मैं क्या कहता हूं, इसका नाम दीजिए हाइट। हाइट इन इंचेस। फाइन, हाइट इन इंचेस। अब देखिए ये फॉर्मूला एंड फंक्शन यहाँ पे है। आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, एक्सेल में जैसे ये फंक्शन दिखाई देता है, बिल्कुल उसी तरह से अप्रोच है आपके सामने। आप यहाँ डबल क्लिक करेंगे और इसको फंक्शन को क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए ये एक सब विंडो और एक दिखाई दे जाएगा। मैं क्या चाहता हूं
कि जो मेरी एग्जिस्टिंग हाइट है, इट इज इन सेंटीमीटर्स, it needs to be converted into the inches. It is a computed variable. Okay. अब देखिए, this height is the variable. आप इसे डबल क्लिक करेंगे, हाइट देखिए, हाइट आ गया यहाँ पे। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बहुत ही डिफिकल्ट मैनी टाइम्स होती हैं अगर हमने थोड़ा सा भी स्किप किया। इन अवर रिसर्च हमें बहुत बार कंप्यूटेशन और ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है। ओके, हाइट। ओके, अब फंक्शंस देखिए, यहाँ पे आपको फॉर्मूला, ये इसे क्लिक करेंगे, यू विल हैव द सो मेनी फंक्शंस आल्सो। ये फंक्शंस हैं आपके, यहाँ पे फंक्शंस हैं आपके। ओके, और फंक्शंस, देन यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस आप देख सकते हैं। इफ कंडीशन भी आप लगा सकते हैं। ये दूसरा सीन होगा। लॉजिकल देखिए, डेट एंड टाइम देखिए, सिमुलेशंस, एन नंबर ऑफ फंक्शंस आर देयर। ओके, let me try once more. So we have height divide by 2.5. The formula, height को 2.5 से डिवाइड करिए और एंटर करिए। दिस फॉर्मूला इज मिस स्पेसिफाइड। अब देखिए, यहाँ पे मैंने जो किया था, डबल क्लिक, इसको मैं हटा देता हूँ। नाउ वी विल एंटर अगेन। नाउ फॉर्मूला इज फंक्शनल। इफ यू गो बैक टू द data view and see, the value has been computed into the inches. देखिए, 125 का 50 हो गया। और दिस सर्किल इज गाइडिंग यू कि दिस इज द कंप्यूटेड वेरिएबल। आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। ओके, मैंने आपको वेरिएबल क्रिएट करना बताया, मैंने आपको कंप्यूटेशन बताया, एंड सिमिलरली नाउ इट्स टाइम टू check what we are going to address it. One more thing, I have some missing values in my data set. These are the missing values. How I am going to handle these values? Okay, double click again this. There is a missing value. हमारे रिसर्च में many times ऐसा होता है कि some of the values are missing. How we are going to address them? Okay, so click and add. मैं दोबारा देखिए करता हूं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे मिसिंग वैल्यूज। वंस यू क्लिक द मिसिंग वैल्यूज, यू विल हैव अनदर पेन and add missing values. Click this plus sign. Now missing values. When source equal to, देखिए यहाँ पे जब आप देखेंगे like this, तो ऑपरेटर्स आपको मिलेंगे बहुत सारे। मैं दोबारा करता हूं। ये बहुत छोटी चीजें लेकिन बहुत डिफिकल्ट हैं। अगर हमने इसको इग्नोर किया, आई एम इंटरेस्टेड नाउ टू डिफाइन द मिसिंग वैल्यू। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, जैसे मिलिक क्लिक किया तो वी हैव ए डिफरेंट विंडो। नाउ ऐड मिसिंग वैल्यू, मैंने इसको क्लिक किया, यू हैव अनदर विंडो। नाउ सोर्स, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको ऑपरेटर्स, देखिए यहाँ पे ऑपरेटर्स मिलेंगे। देखिए, डबल इक्वल मीन्स इक्वल, this not equal, greater than,
I hope it is visible. थोड़ा स्क्रीन छोटा है. डबल इक्वल, अब कर्सर लाइए. नॉट इक्वल टू, दिस इज फॉर इक्वल टू, this is not equal, this is greater than, this is less than, and this is greater than or equal to. Fine. So हम मिसिंग वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं. इफ वैल्यू is 99, then treat it as a missing value. 99 years तो उम्र किसी की होती नहीं है. अगर किसी की वैल्यू एंटर्ड नहीं है तो एंटर इट. एंटर, आप इसे क्लिक कर दीजिए एंड गो टू द डेटा सेट एंड डेटा व्यू. तो यहाँ पे देखिए, अगर इफ यू टाइप ओवर हियर 99, 99, now see the value is there but it is not activated. इसका साइज भी छोटा हो जाता है और इसका फॉन्ट भी देखिए हिडन हो जाता है. लेकिन अगर दूसरी वैल्यू आप टाइप करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं 52 टाइप करता हूं, देखिए तो ये नहीं हिडन होगा. दिस इज वन ऑफ द ब्यूटी. अब जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कंप्यूट द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फॉर द एज. नाउ नेक्स्ट टू कंप्यूट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फॉर एज. तो कंप्यूटेशन के लिए वी विल गो टू एनालाइज. यहाँ पे सारी चीजें रहेंगी. एनालाइज में आइए. जब भी एनालिसिस करनी है एनालाइज में आएंगे. डेटा को देखना है, एंटर करना है या उसको स्क्रीनिंग करना है, विजुलाइज करना है, तो डेटा में आएंगे. वेरिएबल्स के बारे में कुछ चीजें एग्जामिन करनी है तो आप यहाँ पर आएंगे. सो नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू कंप्यूट द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फॉर एज. एनालिसिस में हम आएंगे और यहाँ पर देखिए एक्सप्लोरेशन, समराइजेशन. Actually, the statistics can be divided in two parts: descriptive statistics and inferential statistics. In descriptive and both information are very important for the research, for the dissertation, for making the decision as well. Using the descriptive statistics, we use to summarize the data. Anybody can see using the naked eyes what is the pattern of the data, what is the central tendency of the data, what is the variability of the data. So descriptive statistics. And inferential, we use to make an inference about the data. Generalization, you can compare your computed value with the ready reckoner, or you can say the already available normal values. Exploration. So we will go to the exploration, click it, and the first option is descriptive. This descriptive. And click the descriptive. You have this window with you. Select the gender, age, age. आप इसे क्लिक करिए और देखिए सारी स्टैटिस्टिक्स यहाँ कंप्यूट हो जाती है. Why I was interested? The 99 value was typed into the spreadsheet. This 99 is not being used for computation. You know, so in my data set, the maximum value is 52, not 99. As I declared, 99 value is a missing value, so it cannot be used for computation. So this is the beauty. Actually, at the onset, this is very important. We must screen or plan or clean our data for the analysis. वरना बहुत ही मिसलीडिंग स्टैटिस्टिक्स हो जाती है. फाइन. इसी तरह से इफ यू आर इंटरेस्टेड टू लुक इनटू द बाय जेंडर, अगर देखना चाहें किस में मिसिंग है किस में नहीं है, देखिए अब देखिए मिसिंग केस में फीमेल के केस में 2 वैल्यूज मिसिंग हैं, मेल के केस में 3 वैल्यूज मिसिंग हैं. Now you can correct the values if you are willing to do it or allow to stay back.
फाइन फ्रेंड्स, ये चीज मुझे प्लान करनी थी। और भी बीच बीच में कई एक काम हम करते रहेंगे जैसे जैसा सेशन आगे बढ़ेगा। We can see some more things. If you go to the edit में आइए आप। It's just like a word editor. बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। For example, this is the table. Fine. You can change its title. Table 1 descriptives. Fine. मैंने नीचे क्लिक किया, go to the edit, click it. Now you can have the heading style showing descriptive statistics for variables. ये टेबल हो गया। फाइन। फिर आपने क्लिक किया, अगेन एंटर किया। फाइन। अब देखिए, आई एम इंटरेस्टेड टू क्रिएट द लिंक ओवर हियर। द ब्यूटी इसकी देखिए, जो कि मैं बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ। इफ यू गो बैक टू द दिस, लेट मी क्रिएट द लिंक। अगर मैं अपना लिंक देता हूँ कि हु इज द ऑथर, हु इज द पर्सन responsible for this output and so on, and let me give my link to the analysis faculty members. Let me have my link. This is my link. मैंने यहाँ से कॉपी किया, then again back to the editor, fine, and paste over here. जैसे ही मैंने पेस्ट किया, देन इसको मार्क किया। मार्क करने के बाद you know कि you press this link and paste over here. चाहिए। T P S इसको ले लेना चाहिए। H T P S. Let me try once more. मैं अगर इसी को दोबारा मैं जाता हूँ अपनी साइट में, सर आपकी आवाज कट रही है सर। और यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, कंट्रोल C, and again come to this. No issue, we will once more. सर आपकी आवाज कट रही है सर। हाँ हाँ, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू आ रहा है, मुझे भी वार्निंग आ रही है। This then we have this www.amu.ac.in. Then you can type the, if you are interested to type the detail, यहाँ paste होना चाहिए। some कुछ resources का issue हो सकता है। Psychology and my link. Fine, and save it. Do not forget to save it. Now see, this link is there. If you go back to the this
We will close this application. मैंने close किया. Then again back to this. And now this is the link. When you transfer this export, for example, to the location, browse. Okay, so let me move to the desktop. We have at the desktop. I have a folder as my demo, and give the name for my file, descriptives. Save किया. Save हो गया. Then if I'm back to the, now see, this is the file descriptives. आप डबल क्लिक करेंगे इसको and open it. System misbehave हो रहा है. It's a very nice system, but resources. Now see the beauty of the output. Just as you have seen in the APA format. If somebody trying to approach this link, I click it. Now this will transfer to the my web page. Now see. Anybody can see it, who created this page, who did the analysis. This is one of the link. You can connect the additional topic if you are interested to how to make the interpretation of this table. आप रिसर्च आर्टिकल पेस्ट कर सकते हैं, लिंक दे सकते हैं, आप कोई वीडियो का लिंक दे सकते हैं. दिस द रिफ्लेक्टिव लर्निंग. आप ऑडियंस या अपने स्टूडेंट्स की नजरों में कैसे डिफरेंट हो सकते हैं. So this I plan to discuss with you. The wonderful मैं अक्सर इस यूज करता हूँ इस तरह से चीजों को. फाइन फ्रेंड्स, अब बहुत क्विकली और बढ़ेंगे आगे. आई होप यहाँ तक चीजें काफी हैंडी हो गई हैं. Now we will work some more analysis. Okay, let me go for the this conditional analysis. For the condition, यहाँ सारी चीजें आप एक्सप्लोर करिए. बहुत ही वंडरफुल एप्लीकेशन है, that it can help you. Okay, so go to the analysis. और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें और मिल सकती हैं. You see the this go to the variable view, and if I click the gender, double click it. When I double click it, now see there is a filter, conditional analysis. मैं स्लो चल रहा हूं, देखिए. अब मैं कंडीशनल एनालिसिस का क्या मतलब है कि आई एम इंटरेस्टेड टू कंप्यूट द स्टैटिस्टिक्स इन केस ऑफ फीमेल ओनली. हमारे डेटा सेट में बहुत डिफरेंट तरह का डेटा होता है. मेनी टाइम्स वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू चेक द और कंप्यूट द स्टैटिस्टिक्स फॉर अदर वेरिएबल्स. या मान लीजिए आपने रिसर्च का डेटा कलेक्ट किया. सम ऑफ द डेटा pertains to your pilot study and some data for the main study. Now you want to compare the pattern of the pilot study as well as main study. बहुत सारी कंडीशंस की हमें जरूरत होती है. तो मैंने देखी सिंपली अभी जेंडर को डबल क्लिक किया था. अभी कुछ नया नहीं किया. वंस आई डबल क्लिक्ड इट, आई एम इन वेरिएबल मोड, देन आई विल गो टू द फिल्टर. आप इसे क्लिक करिए.
और जैसे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देखिए सीन को होगा। आप पहले ये क्लिक करिए, फिल्टर बहुत सारे लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे जेंडर करता हूं, देखिए जेंडर, डबल क्लिक करिए, जेंडर, जेंडर, उसके बाद इक्वल टू फीमेल, आप टाइप कर दीजिए विद इन कोट, इट हैज टू बी विद इन कोट, और नंबर इसमें आना चाहिए, नंबर भी आ जाएगा, कोट के साथ भी आ जाएगा। लेट मी चेक इट, दिस द फिल्टर। I want to select the data set, data in my data set, those are having gender as a female. देखिए यहाँ पे एरर आ रही है। एरर क्या आ रही है? वो 2 बार इक्वल साइन कह रहा है, इक्वल के लिए मैंने 1 बार ही लगाया है। जैसे आपने स्पेसेस में देखा होगा, इट गिव यू द वार्निंग कि कुछ गलत हुआ है। तो आप यहाँ पे 1 बार और इक्वल साइन मैंने इंटेंशनली स्किप किया था, किया और एंटर किया, एंटर कर दिया। और देखिए इंस्टेंटली यहाँ पे आपकी एनालिसिस भी अपडेट हो गई। द ब्यूटी देखिए, जो कि एसपीएसएस में पॉसिबल नहीं है, वहां एवरी टाइम एडिशनल गार्बेज इन इज गोइंग इनसाइड द आउटपुट विंडो। यहाँ पे आपकी वो उसी फाइल को अपडेट करता है, उसी आउटपुट को अपडेट कर। नाउ दिस एनालिसिस इज रिलेटेड टू द फीमेल्स ओनली। 1 सेकेंड में आपने देख लिया। एन नंबर, अनलिमिटेड नंबर फंक्शंस लगा सकते हैं। Gender is equal to female and age is greater than 30, and number of limitation factors are there. अब देखिए यहाँ पे और देखिए एक फिल्टर का नया वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट हो गया है। इफ यू गो बैक टू द डेटा, आप यहाँ पे आइए, डेटा में आप यहाँ पे आते हैं, तो आप देखिए द ब्यूटी, देखिए कि डेटा एडिटर में देखिए उसकी स्मार्टनेस देखिए, जहां जहां फीमेल है सिर्फ उसी को उसने मार्क किया है, बाकी को अनमार्क कर दिया। दिस इज टेम्परेरी मार्किंग, अनमार्किंग, क्योंकि हमने कंडीशन दी कि आई एम इंटरेस्टेड टू एनालाइज द फीमेल्स ओनली, सो दिस एनालिसिस इज रिलेटेड टू द फीमेल्स ओनली। देखिए सारा डेटा चला जाता है, हर एक पूरा पूरा डेटा उनसे रिलेटेड। So this is the conditional if जो मैंने आपसे प्लान किया था फ्रेंड्स। Few more minutes, let me go back to the some more activity. Now uh, uh, we are interested to open the another file. Perhaps this happiness. Okay, we will continue with the employee data file. It is with you. Employee data file. Open the existing file. Employee data. See, this is the employee data file. Please open the employee data file. Okay. Now I am interested to compute the frequency of female. Again, we will go to the frequencies and this, and select the gender. Now see the outputs. Total we are having 474 cases. Out of 474, 216 are female and 258 are males. Another variable, if I am interested to go for, select the variable. Job time is not the right variable to compute the frequency. Minority, we will go for the minority. Minority, now see.
the minority. Gender की this information, minority की this information. अब for example, if I am interested to create the cross tab, very important statistics. देखिए किस तरह से जाएंगे. अगेन दिस ये एरो गाइड करेगा आपको वापस जाने के लिए. देखिए क्रॉस टैब, अगर पॉसिबल हो सके तो प्लीज इंडेक्सिंग आप बनाते चलिए कि हमने क्या क्या सीखा, जिससे कि एक अच्छी लर्निंग हो. ओके frequencies, come to the frequencies, and you are having this n outcomes, n. इसे क्लिक करिए and you are having this statistics, this another window. No, sorry, we will go back to this frequencies and this contingency table. We will come to this chi-square test of independence. आप लोगों ने देखा होगा, सीखा होगा, उसी से रिलेटेड है ये क्रॉस टैब. तो देख आप यहाँ पे क्लिक करिए and you have this window. The template is ready to fill the information. तो रोज में देखिए मैं जेंडर लूंगा. जैसे ही मैंने देखिए इंफॉर्मेशन ली, यहाँ पे लेबल्स आ गए, जेंडर एंड मेल एंड फीमेल. कॉलम्स में मैं जॉब कैटेगरीज लूंगा फॉर एग्जांपल. कॉलम्स में मेरा सिस्टम आज कुछ मिसबिहेव कर रहा है. इट्स वर्किंग वेरी i7 होते हुए फर्स्ट टाइम आई एम फीलिंग देयर इज ए इशू. नाउ सी wonderful statistics. Now see the table. I'm sure it is visible to you. Cross tab यानी दो वेरिएबल्स को एक साथ लेके कई बार हम एनालाइज करना चाहते हैं. वी वांट टू समराइज अवर डेटा सेट. कितने लोग फीमेल क्लरिकल पोजीशन में हैं, कितने फीमेल कस्टोडियल में हैं, कितने मैनेजर्स में हैं, कितने मेल क्लरिकल में हैं, वगैरह वगैरह. And this is the value of chi-square test of independence. This is one of the test of non-parametric test. यहाँ पे देखिए आपको वंडरफुल स्टैटिस्टिक्स मिल गई क्रॉस टैब. और बहुत खूबसूरत आप इस टेबल को बना सकते हैं. देखिए स्टैटिस्टिक्स हम इसी में काम कर रहे हैं. दिस विल बी द लास्ट डिस्कशन ऑफ द डे. कंटिजेंसी टेबल्स, यू कैन हैव n नंबर ऑफ कैटेगरीज ऑल्सो. अब देखिए यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स, आप इसे क्लिक करिए. इसके अलावा क्या क्या और कंप्यूट कर सकते हैं. लाइक्लीहुड रेशो, बायो स्टैटिस्टिक्स में देखिए ऑड्स रेशो कंप्यूट करते हैं. ये सारी चीजें आप कर सकते हैं. डेटा अगर आपका नॉमिनल है, you are comparing for example gender and the job category, then I am interested to compute the contingency coefficient. Contingency coefficient help you to examine the relationship between two variables, and chi-square test help you to examine the independence. Cell frequencies are independent altogether or not. Phi and Kramers also. अगर डेटा आपका ऑर्डिनल है तो आप ये कंप्यूट कर सकते हैं. अब सेल्स में देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं. सेल्स में आइए. जैसे जो लोग SPSS से फेमिलियर हैं, सेल्स में इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कंप्यूट द फ्रीक्वेंसीज परसेंटेज एज वेल, तो देखिए मैं यहाँ पे रो को क्लिक करूंगा. जैसे ही रो को क्लिक किया तो देखिए विद इन परसेंट रो परसेंट आ गया. मेरे डेटा सेट में जो फीमेल हैं क्लरिकल हैं, they are 95.4% row wise percentage. 216 is the grand total in this case, row total. Out of 216, 205 is 95.4%. 10 is 4.6%. Within row आपको परसेंट मिल गया. Now coming to the column, column क्लिक कर दीजिए.
तो अब देखिए विद इन कॉलम परसेंटेज आ गया। क्लेरिकल पोजीशन में मेरे पास 363 लोग हैं मेरे सैंपल में। आउट ऑफ 363 जो क्लेरिकल पोजीशन में हैं एंड फीमेल हैं, दे आर 56.4%। जो क्लेरिकल हैं मेल हैं, दे आर 43.3%। जो मैनेजर्स हैं फीमेल 11.9%। जो मैनेजर्स हैं मेल हैं 88.1%। मेल डोमिनेंट सोसाइटी। डिसीजन मेकिंग देखिए, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स नेकेड आई से आपको एकदम आप बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में जाइए, वहां डैशबोर्ड होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन एक नजर से आदमी देख ले कि इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या शेप है। थर्ड पार्ट देखिए, टोटल। अगर आप टोटल करते हैं क्लिक, तो आउट ऑफ 474 कितने लोग फीमेल हैं एंड क्लेरिकल पोजीशन में काम कर रहे हैं, कितने लोग मैनेजर हैं और एज ए फीमेल उनका जेंडर है 2.1%। So on the basis of this table only, you can you can write a very big paragraph for your research article or dissertation. This is about the summarization of the data set. Okay. So मैं इसे कंप्लीट करता हूँ। नाउ कमिंग टू द प्लॉट्स ऑल्सो। देखिए प्लॉट्स में देख लेते हैं, थोड़ा सा और फीलिंग आएगी कि अगर बार प्लॉट्स हम देखना चाह रहे हैं तो देखिए इसको मैं क्लिक किया, जस्ट क्लिक अवे। कितना फेथफुल देखिए एक एप्लीकेशन हो सकता है। देखिए जेंडर के हिसाब से मेल देखिए जेंडर ज्यादा है, और इसमें देखिए मैनेजर्स आ गए, मेल में तीनों का आ गया, फीमेल में तीनों। फीमेल में देखिए एक 0 था, अगर आपको याद आ रहा है इंफॉर्मेशन दिस वन। कस्टोडियल में एक भी फीमेल नहीं थी, तो इसीलिए देखिए ये ग्रीन वाला बार इसमें नहीं आ रहा है। कॉलम वाइज अगर देखना चाह रहे हैं तो देखिए आप इस तरह से प्लॉट ले लीजिए। देखिए क्लरिकल पोजीशन में ये हो गए, कस्टोडियल में ये हो गए, मैनेजर्स में ये हो गए। स्टैक्ड अगर लेना चाह रहे हैं तो देखिए इस तरह से ले लीजिए। देखिए मेल फीमेल। फ्रेंड्स ख्याल रहे, देयर इज अ वार्निंग, आई हैव अ मैसेज फॉर द यंग रिसर्च स्कॉलर्स। प्लीज डू नॉट यूज 3D चार्ट और ग्राफ्स इन योर थीसिस। As per APA guidelines, only the two-dimensional graphs charts are allowed. तो जितने भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की एप्लीकेशंस हैं, दे आर अप्रिशिएटिंग ओनली, दे आर गिविंग यू ओनली द 2D चार्ट्स। कितना ब्यूटीफुल देखिए चार्ट आता है। आपने इसको क्लिक किया और कॉपी किया और आप अपने वर्ड में चले जाइए और वहां पे पेस्ट कर दीजिए कि इससे ज्यादा खूबसूरत और क्या हो सकता है। देखिए कोई कह रहा है कि साहब इसको आपने कहीं से कट एंड पेस्ट किया है, इतना ब्यूटीफुल तो स्पेसेस में नहीं आता है। So friends, now it's time to conclude. So many things I decided to uh, finish, but time के limitations हैं। अगर कोई question हो तो please बताइए। Actually, I'm speaking from my house. I need to rush to the department. I have a class as 9:40. Any question drop करें, और इस session के बारे में आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। Some serious discussions are going in days to come. यहाँ तक बताइए कुछ कैसी लर्निंग रही, क्विकली बताइए, then I will close the class. सर इट वाज अ ब्यूटीफुल लर्निंग। वी डेफिनेटली हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, टैब के साथ खेलना पड़ेगा। वट एवर डेटा वी हैव थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे, अगर कहीं अटक गए तो अगले सेशन में पूछेंगे सर। सर बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है। वी नीड योर डिटर्मिनेशन के एक्चुअली होना चाहिए, एक पैशन होना चाहिए। एक सर मेरा मेरा प्रोफेसर के लिए जब सिलेक्शन कमेटी थी तो प्रोफेसर आनंद प्रकाश साहब फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी वाज द एक्सपर्ट। ही इज अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, माय ग्रेटिट्यूड टू हिम, and he raised one of the question
एक्चुअली साइकोलॉजिकल टेस्ट डेवलपमेंट में मेरा बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है. ओवर द इंडियन रेलवेज आई डेवलप्ड 110 and staying with the academics more than 30 tests developed, standardized and published. तो आनंद सर ने मुझसे बोला, जब उन्होंने सीवी देखा तो परहैप्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं 12 या 13 बना पाया था, और मेरी 5 साल की नौकरी हुई थी एज एसोसिएट प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी. सिलेक्शन कमेटी लेट होती है, 3 साल बाद हम लोग प्रोफेसर हो जाते हैं, लेकिन लेट थी. तो आनंद प्रकाश साहब ने सवाल किया कि डॉक्टर खान, हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि यार इन 35 years आई हैव नॉट बीन एबल टू डेवलप ए सिंगल टेस्ट, लेकिन आपने 6 साल में 12 डेवलप कर दिए. तो सर मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूँ. व्हाई आई रिएक्टेड, उनके सर यू नो आई लव टू प्ले विद नंबर्स, or when you torture the number they will confess. I have seen it number of times. तो आनंद प्रकाश साहब हंसे. उन्होंने वाइस चांसलर साहब से कहा कि सर एसएम खान का तो एप्टीट्यूड मैं पिछले 20 साल से जानता हूं. व्हेन ही वाज वर्किंग विद द इंडियन रेलवेज, ही इज एन एसेट टू यू. तो सर मैं बहुत अलग नहीं हूं, बहुत डिफरेंट नहीं हूं, लेकिन एक पैशन जरूर है टू मेक ए डिफरेंस. तो सर यू कैन ऑल्सो मेक ए डिफरेंस. आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत डिफरेंट हैं. प्लीज डू ड्रॉप योर कमेंट्स और क्वेरीज एट द व्हाट्सएप. डॉक्टर आरती मैम प्लीज मुझे Yes, अलाउ sir. करिए. एक्चुअली Yes, sir. मेरे लिए Yes, sir. क्लास Yes, sir. क्लास Yes, sir. बहुत इंपॉर्टेंट. अगर लेट Definitely, हुआ तो definitely, sir. मेरे लिए Sir. बहुत मुश्किल हो Yes, जाएगा. sir. Yes, sir. Simi ma'am, you can just wind up in कमिटमेंट 2 minutes. वहां भी है कि Definitely, definitely, sir. प्लीज प्लीज अलाउ करें. आज तो छोड़ दीजिए जल्दी Yes, से. definitely. Just within 1 minute, just 1 minute, sir. Good afternoon, everyone. On behalf of the Department of Commerce, Kristu Jayanti College, Bangalore, I extend a heartfelt gratitude to Professor S.M. Khan from Aligarh Muslim University, UP, for today's enlightening and hands-on session on statistical techniques using Jamovi. Your expert insights and engaging delivery have truly enriched our understanding. I would also like to take this moment to thank our HOD, program coordinator, and their DP coordinators. At the same time, our dedicated faculty members also. And finally, a big thank to you, all the participants, for your active engagement and enthusiasm. Thank you once again, everyone. थैंक यू. Thank you, sir. प्लीज Thank you, प्लीज sir. अलाउ करें. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Stay You can blessed. take a leave. We will see tomorrow. Please. Yes, Thank you. definitely. Thank you, sir. Thank Thank you. you.